इसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है। अब इसे हम हेक्सा ब्लेड के द्वारा कट कर लेंगे। पीवीसी पाइप को हर 2 सेंटीमीटर के मार्क पे काट लेना है। 3.5 सेंटीमीटर लंबाई काटते जाना है प्रोपेलर बनाने के लिए। अब इसे हम सैंड पेपर पर घिस लेंगे प्रोपेलर को। जैसे मैंने प्रोपेलर को बराबर सेक दिया उसी आप दे दीजिएगा। प्रोपेलर को खींचे हुए लाइन से थोड़ा तिरछा ही लगाएं।
चलिए अब हम इसका बॉडी बनाते हैं। पीवीसी पाइप को 2 स्क्वायर शेप में काट लेंगे। पीवीसी पाइप के सेंटर में मार्क करके उसे ड्रिल मशीन के द्वारा होल कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। पंप के हेड को मोटर के बेस के साथ चिपका देना है।
चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। लेकिन पहले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए देखते हैं कि ये 45 सेकंड में भर पाता है कि नहीं। तो हमारे पंप ने जग को पानी से 12 सेकंड पहले ही भर दिया। साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।